So guys, I am going to explain you the reasons why examiner is not giving you 7 band score and the solution to overcome these problems. So let us get started without wasting further time. I know आप लोगों में से काफ़ी 6.5 कॉन्टिन्यूसली ला रहे हैं. लेट्स से अपने 5 अटेम्प्ट्स दिए एंड आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट्स में 6.5 हमेशा राइटिंग में यही था. So you also do not have lack of inspiration this particular time because you are not getting the desired band scores. I'll suggest you to please focus. I'll suggest you to focus on writing module in such a manner that you get 7 band score in your first attempt. So watch this video carefully. First of all guys, आप लोग क्या गलती करते हो? फर्स्ट मिस्टेक जो है यहाँ पे वो है कि you are writing inadequate number of paragraphs. And I'll suggest you to make 4 body paragraphs for every essay type except advantages outweigh disadvantages और to what extent do you agree or disagree. So देखो हम क्या करते हैं, देखो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आई हैव सीन वेरियस एसेज और जहाँ पे ये मिस्टेक होती है कि फॉर वन रीजन वन बॉडी पैराग्राफ एंड अदर रीजन एंड अदर बॉडी पैराग्राफ विच इज़ नॉट अ राइट थिंग. We just need 4 body paragraphs for every essay type except the 2 mentioned above. So first of all, opinion essay है. First body paragraph, first में introduction followed by body paragraph 1 जहाँ पे आप दोगे why do you agree, body paragraph 2 again why do you agree and conclusion. So you are going to make only 4 body paragraphs. ठीक है. In a similar manner discuss both views. Then you have advantages and disadvantages essay, problem solution essay, only 4 body paragraphs. But if you have discussed both views and give your opinion, you can make 5 or you can include your opinion in introduction as well as in conclusion. So this is the first thing. Second mistake that many students are doing. Second mistake is आप लोग क्या गलती करते हो कि आप लोग इनकरेक्ट फॉर्मेट यूज कर रहे हो. एंड व्हाट इज द इनकरेक्ट फॉर्मेट? इनकरेक्ट फॉर्मेट इज यू आर नॉट लीविंग अ लाइन आफ्टर एवरी पैराग्राफ. देन फॉर एवरी रीजन यू आर पुटिंग आउट वन reason 1, reason 2, reason 3. You need not to mention, you need not to introduce reason 1 is this, reason 2 is this. It is not an essay written by a 4th class or 5th class student. You all are writing a formal essay and that should be at a level of graduation or post graduation level essay they are looking forward to. And for that there is no requirement of first reason, second reason, arrow, introduction, arrow, then body paragraph 1 arrow. There is no point of doing this. I'll just suggest you to use the correct format by making only 4 body paragraphs and leave one line after every body paragraph. It is going to meet the requirements of the examiner. Now, third mistake. Many of you, I believe, मेरे से नहीं पूछते होगे तो किसी और यूट्यूबर से पूछते होगे, किसी और एजुकेटर से पूछते हो कि सर प्लीज टेल अस द फॉर्मेट, प्लीज टेल अस द स्ट्रक्चर, प्लीज टेल अस द लाइंस जो हम कॉपी कर लें और हमारा स्कोर आ जाए. यू आर डूइंग इट रॉन्ग. एक्चुअली वो टाइम चला गया जब एग्जामिनर को पता नहीं चलता था. येस, देयर वाज अ टाइम when examiner didn't get to know that you have used memorized language and they used to give you even 7. I have seen students who didn't even know how to speak properly, they got 7 band in writing. So point is, for getting 7 band in writing or for getting your desired band score, you should not use memorized language at this particular time. Examiners catch it very easily and they do not give you the score. अब ये जो भी मैं आपके साथ information आज share कर रही हूँ, this I have got to know from the examiners themselves. So I had a word with British Council examiner, one of the IDP examiners, because they are in touch with me and they are like my colleagues. When I was doing my masters, one of them was the educators and one was my colleague. So I am still in touch with them. Point is this, you just need to focus on the things you are writing. Okay, you need to focus on the idea, elaborating the idea. Okay, so for that do not use memorized language. Instead you can use some pattern which is going to help you. So again मैं एक pattern की वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें कोई memorized language नहीं है, but yes I'll tell you कि ये वाला rule आप grammar का इस sentence में use कर सकते हो, then passive voice, and I hope that will help you.
नाउ मेमोराइज लैंग्वेज मतलब कि यूज नहीं करनी है, यूज योर ओन आइडिया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन रखो। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ मिस्टेक, जो फोर्थ मिस्टेक है गाइज यहाँ पे है वो है स्पेलिंग एरर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि essay is well written, the student has explained the ideas properly, he or she has expounded the essay, ठीक है, expounded every viewpoint in detail, but still he got 6.5 because there were numerous spelling mistakes. So for this I'll suggest you to proof check your essay every time before giving it to the इन्विजिलेटर। सो जब आपने लिख दिया है जल्दी से प्रूफ चेक करो तभी दो। प्रूफ चेकिंग में करेक्ट योर स्पेलिंग्स, करेक्ट बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। नाउ द फिफ्थ वन गाइस, फिफ्थ में है एंड आई वुड से इट इज फिफ्थ बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। गिव योर ओपिनियन क्लियरली in the introduction and follow it throughout the essay. Let's say the question is asking what are the advantages and disadvantages. So here you can just introduce one of the advantages and the same with disadvantages, one of the disadvantages in the introduction itself. So it's just like outlining your ideas. This is going to help you a lot and maintain the format throughout the essay. So जो introduction में अगर अपना opinion दिया है, I totally agree with the above assertion. So वही आपका थ्रू आउट दी essay फॉलो होना चाहिए एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, सो जस्ट डू दिस। अपने एक ओपिनियन हमेशा बिगिनिंग में लिखो। व्हेन यू आर प्लानिंग योर essay, राइट योर ओपिनियन क्लियरली एंड देन ओनली यू शुड प्रोसीड फर्दर। नाउ विल प्रोसीड टू द लास्ट वन विच इज द सिक्स्थ वन। प्लीज 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 कभी भी ये मत करना कि आप एग्जाम्पल नहीं मेंशन कर रहे। 2 एग्जाम्पल्स आर रिक्वायर्ड इन एवरी essay, वन इन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड अदर इन बॉडी पैराग्राफ 2। जरूरी नहीं है कि हर एक एग्जाम्पल में ही आपने लिखना है एन आर्टिकल पब्लिश इन द टाइम्स, दैट इज नॉट राइट। सो इंस्टेड 1 में एक आर्टिकल पब्लिश इन द न्यूज़पेपर कर सकते हो, बॉडी पैराग्राफ 2 में वेरियस स्टडीज कंडक्टेड बाय द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिवील्ड दैट, कुछ ऐसा लिख सकते हो। एंड इट हैज बीन नोटिस्ड दैट, वो बेटर होगा। इट हैज बीन नोटिस्ड मैनी टाइम्स दैट, जो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं बट यू आर मेकिंग इट अप, सो इट हैज बीन नोटिस्ड मैनी टाइम्स दैट, इट हैज बीन प्रूवन मैनी टाइम्स दैट। यू कैन गिव एन एग्जाम्पल लाइक सच। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूके वेरियस सुपर स्टोर्स इन द यूके वेरियस स्टडीज कंक्लूडेड, क्या हुआ आप ऐसा कुछ बता सकते हो, ठीक है। इन द यूके वेरियस स्टडीज कंक्लूडेड दैट, ठीक है। सो गिव एन एग्जाम्पल लाइक सच, यूके से रिलेटेड कुछ दे सकते हो। एंड इसी में मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जो क्वेश्चन में पूछा है वो सारे पार्ट्स आंसर करो प्रॉपरली, आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। इफ द क्वेश्चन इज सेइंग एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, सो यू हैव टू राइट मिनिमम 2 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस, और 3 advantages and 2 disadvantages in order to fulfill the requirement of the question. Then only you will get your desired band score. So guys, I have told you 6 mistakes that you guys are committing and the reasons why you are getting 6.5 continuously, why IDP or British Council is not giving you 7 band. I have given you the solutions for the same. So I'll suggest you कि ये follow करो and then let me know कि is it helping you or not. I'm sure this thing will help you a lot and you can go through my writing playlist. वहाँ पे there are numerous videos available. अगर आप लोग कोई कोचिंग भी नहीं लेते ना तो भी आप वो राइटिंग प्लेलिस्ट अच्छी तरह देख के यू कैन गेट द स्कोर्स। मोर ओवर देखो, राइटिंग एंड स्पीकिंग में यू डोंट नीड कोचिंग फॉर द प्रिपरेशन, उसके लिए सारा मटेरियल ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे दे रखा है। यू नीड, आपको कोई असेसमेंट के लिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आपको पता ही नहीं है आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, कोई आपको गाइड ही करने वाला नहीं है कि आपकी ये मिस्टेक्स हुई। फॉर एग्जाम्पल श्रुति, कह सकते हैं एक स्टूडेंट कि श्रुति यू आर कमिटिंग दिस मिस्टेक, आज वाले ऐसे में आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो है रिलेटेड टू, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स हुई हैं आपके ऐसे में, या फिर लेक्सिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड मिस्टेक्स हुई हैं। जब तक आपको कोई गाइड नहीं करेगा यू विल नॉट इम्प्रूव। सो बेसिकली स्पीकिंग एंड राइटिंग के लिए यू नीड समवन टू असिस्ट यू, समवन टू गाइड यू एंड देन ओनली यू विल बी इम्प्रूविंग। सो फर्स्टली प्रिपेयर एवरीथिंग थ्रू द वीडियोज इन द राइटिंग प्लेलिस्ट and then get the assessments. Thank you so much guys. I'll see you again with the next video of mine. Bye bye.